हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप विच इज़ चैप्टर 2 ऑफ द न्यू एनसीईआरटी ग्रेड 8 सोशल साइंस टेक्स्ट बुक है ना। तो आज हम लोग कुछ मज़ेदार करने वाले हैं। इफेक्टिवली आज हम लोग जो चीज़ करेंगे वो है केस बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि रियल लाइफ एग्जांपल्स, एनेक्डोट्स, इवेंट्स, ट्रैवलर अकाउंट्स, रूलर्स पॉलिसीज एंड रेजिस्टेंसेस जो कि आप इस किताब में पढ़े हो, इन सब के ऊपर में हम आपको एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट सिचुएशन बताएंगे। उसके ऊपर 2 से 3 एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और डोंट वरी, द आंसर्स विल बी देयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट केस, अलाउद्दीन खिलजीज सेकेंड अलेक्जेंडर कॉइन। ओके, सो ये आप रेफर करिए फिगर 2.6 इन टेक्स्ट। सो एक्सट्रैक्ट क्या है, अलाउद्दीन खिलजी हैज इशूड कॉइन्स, जहाँ के क्या इंस्क्राइब किया गया है, सिकंदर सानी, दैट इज सेकेंड अलेक्जेंडर। तो फिर क्वेश्चन वन, व्हाट डू यू थिंक अलाउद्दीन चोज दिस टाइटल, वन नॉट समथिंग एल्स, and what does this suggest about medieval rulers use of ideology and symbolism? साथ ही साथ, हाउ डिड अलाउद्दीन फाइनेंस हिज एक्सपेंशन कैंपेन्स? तो देखिए यहाँ पे जो है उसने ये जो किया, जो सब इंस्क्राइब किया, और ये जो सवाल है दे आर मोर और लेस रिलेटेड, एंड द रीजन इज ही हैज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ एज कॉन्करर इक्वल टू अलेक्जेंडर, जो कि थोड़ा बहुत आज डोनाल्ड ट्रंप के अंदर आप देख सकते हो। वो भी अपने आप को इस दुनिया का सबसे महान, अब तक का पूरे इतिहास में कोई पैदा हुआ होगा ऐसा अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो भी स्ट्रैटेजीज तैयार कर रहा है। ओके, तो ये पास्ट में हो चुका है, ऐसे बहुत लोग बहुत बार करते हैं जिनके पास में पावर आ जाता है। ये हमको और भी बताता है कि सिंबॉलिज्म बेसिकली एनहांस्ड लेजिटिमेसी एंड वेल्थ। उसने जो एक्सपेंशन किया था, कहाँ से आया था भाई कैंपेन्स? द वेल्थ वाज फ्रॉम हेवी टैक्सेशन एंड प्लंडर, लोगों से लूट मार करके उसी से उसने फाइनेंस किया था अपने आर्मी को। ओके, ये आपने पढ़ा है टेक्स्ट में। केस 2, मोहम्मद बिन तुगलक टोकन करेंसी। तो देखिए एक्सट्रैक्ट क्या है, चीप कॉपर कॉइन्स वर डिक्लेयर्ड इक्वल टू सिल्वर और गोल्ड। क्या बात है। एंड पीपल बिगैन काउंटरफीटिंग देम वाइडली, मतलब लोगों ने उसको और भी गलत तरीका से बनाना शुरू कर दिया, नकली कॉपर कॉइन बनाए, क्योंकि वहां पे बोला गया था भाई दिस इज इक्वल टू गोल्ड और सिल्वर। सो द क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द एक्सपेरिमेंट फेल डिस्पाइट साउंडिंग प्रोग्रेसिव, एंड हाउ इज दिस कनेक्टेड टू ट्रस्ट इन इकोनॉमिक सिस्टम्स? इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। एंड व्हाट लेसन डज दिस होल्ड फॉर करेंसीज टुडे? एक ही चीज बताता है कि लैक ऑफ एनफोर्समेंट एंड ट्रस्ट, दोनों चीज, एनफोर्समेंट भी नहीं था और लोगों में विश्वास भी नहीं था। अरे किस पे विश्वास करेंगे? जिस चीज पे जो कि आसानी से नकली में बनाया जा सकता है। नाउ पीपल मिंटेड फेक कॉइन्स, जो कि हम बता रहे थे, एंड दिस बेसिकली शोज इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ स्टेट इन इशूइंग मनी। आप किसी भी चीज को आसानी से मनी बोल के नहीं दे सकते हो, ओके, वरना आपका खुद का सवाल उठेगा कि आप कैसे स्टेट को चला रहे हो। ओके, केस 3, कैपिटल शिफ्ट टू दौलताबाद। ओके, अब हमने पढ़ा है इसको। तो मोहम्मद बिन तुगलक ही फोर्स्ड पीपल टू मूव ओवर 1000 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। इसकी वजह से बहुत लोग मर गए। नेक्स्ट, व्हाई वाज दौलताबाद चोजन, एंड हाउ डिड एन एम्बिशियस डिसीजन बैकफायर? इतना एम्बिशियस डिसीजन था उसका, बैकफायर क्यों किया? और इससे आपको क्या पता चलता है? तो देखिए, मोर सेंट्रली लोकेशन टू कंट्रोल डेक्कन, वो डेक्कन को कंट्रोल करना चाहता था, इसीलिए वो सेंट्रली लोकेट करना चाहता था। और लोगों का ये जो उसका डिसीजन था बैकफायर इसीलिए हुआ क्योंकि ये जाने में जो हार्डशिप्स था उससे बहुत लोगों का डेथ हो गया। और इससे हमको क्या पता चलता है? इट शोज गैप बिटवीन विजन एंड एग्जीक्यूशन। आप कुछ सोचते हैं और जिस रकम से कार्रवाई करते हैं, अगर दोनों में समानता नहीं है तो मुश्किल है, आपके विजन तक आप कभी पहुंच ही नहीं पाइएगा। समझ रहे हैं? तो इस चीज की बहुत बड़ी कमी थी, देयर वाज अ गैप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर's 1398 invasion of दिल्ली, इसके ऊपर। तो तैमूर recorded, I invaded India to wage war on infidels and plunder wealth। तो क्यों भाई?
What dual motives that this reveal about invasions? Dual motive है यहाँ पे, क्या है? देखिए, वार ऑन इन्फेडल्स एंड प्लंडर वेल्थ, मतलब यहाँ पे रिलीजियस रीजन भी है, साथ ही साथ हमको इकोनॉमिकली मोटिव भी है, हमको पैसा भी लूटना है और रिलीजन को भी बढ़ावा देना है, अपने रिलीजन को दूसरों को हटा के या दूसरों को कन्वर्ट करके, समथिंग लाइक दैट. Okay, how did plunder affect Delhi's economy and society afterwards? Basically, it caused massive destruction and depopulation. लोग भागने लगे, कुछ बचा ही नहीं वहाँ पे. Okay, what emerged after his withdrawal? It was Lodis, जो कि later rose, but their territory has much shrank, छोटा हो गया था. Okay, next question है आपका, next case है आपका नरसिम्हा देवा वन और कोणार्क सन टेम्पल के ऊपर. तो फिर he built basically partly, it was built partly to commemorate victories against Delhi Sultanate invasions. So इससे हमको क्या पता चलता है? What role do temples play apart from worship? Yes, it plays the role of economic and cultural hub. Okay, दोनों चीज को दर्शाता है. हमारे पास कितना पैसा है, हम ओपन माइंडेड है, हमारे साथ आकर के आप ट्रेड करिए, इन सब चीजों को इनडायरेक्टली बताया जा रहा है. नाउ हाउ कुड टेम्पल कंस्ट्रक्शन सर्व पॉलिटिकल पर्पस? बेसिकली द रीजन इज द टेम्पल इटसेल्फ इज अ सिंबल ऑफ रॉयल पावर एंड रेजिस्टेंस. ओके, सो नेम वन फेमस टेम्पल बिल्ट इन दिस एरा फॉर सिमिलर रीजन. इट इज द होयसाला's Halebidu. Okay, now नेक्स्ट केस है आपका मुसुनूरी नायका's confederacy. So you see 75 Telugu chieftains joined forces to expel Tughlaq army from Warangal. Now why is this confederacy historically important? एक साथ जो आए क्यों important है? Because ऐसा बहुत कम देखा जाता है, rare regional unity. This was very rare. Now, what challenges would arise uniting 75 rulers? Basically, the issues of loyalty, different interests. सबके अलग अलग इंटरेस्ट होंगे तो स्वाभाविक है. जब कोलिशन गवर्नमेंट बनता है आज अपने देश में, डेमोक्रेसी में, तो आपको क्या लगता है वो स्टेबल क्यों नहीं होता? क्योंकि हर एक पार्टी जो कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है उसके अपने कुछ मंसूबे होते हैं, इंटरेस्ट होता है, उसको सर्व करना चाहते हैं, इसको लेकर के बहुत खींचातानी चलता है. सो द कोएलिशन गवर्नमेंट का जो पीएम होता है ना, उसका हालत बहुत टाइट होता है. उसको चारों तरफ से आप सोच सकते हो कि उसको चेन से बंधा रहता है, वो फ्रीली काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज ही हैज टू सर्व द डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट पार्टीज विच हैव मेड द कोएलिशन गवर्नमेंट. इसीलिए एक अच्छा डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो पावर में है, जो गवर्नमेंट, वो आपका कम से कम कोएलिशन हो, ताकि देर इज अ फ्रीडम टू डू सम वर्क. ओके, व्हाट डज दिस रिवील? मतलब ये जो 75 चिफ्टन्स की कहानी है उसकी बात कर रहे हैं. व्हाट डज दिस रिवील अबाउट रीजनल सॉलिडारिटी? वेल, इट शोज रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड अलायंसेस. मतलब एक आप पेंसिल लोगे आसानी से तोड़ दोगे, आप 10 पेंसिल लोगे तो तोड़ नहीं पाओगे, वही वाला कहानी है. यहाँ रेजिस्टेंस हमको करना था, तो it required alliances between the 75 Telugu chieftains. Okay, next question है आपका होयसाला emblem के ऊपर. So the extract is the folklore of Sala shrinking down a lion gave dynasty its name, है ना? तो what does an emblem represent? Basically it represents courage and legitimacy. ये जो है ना, ये emblem बहुत कुछ दिखाता है, legitimacy and courage. Next, how did Hoysala resist Delhi's army? It was through resisted invasions. What happened to their kingdom later? Eventually, they merged into the Vijayanagara Empire. Okay, next question है आपका कुंभलगढ़ फोर्ट्स giant wall के ऊपर. So it's basically a 36-kilometer wall built by Rana Kumbha in Aravallis. क्यों भाई? First question, why choose a hill forest location for forts? Because of natural defense and it was hard to access. Next, compare with the coastal defenses in the same area.
Basically, we will require contrasting geographical strategies for that. ठीक है, इलाका ही अलग है, डिफरेंट स्ट्रैटेजी आपको यूज करना पड़ेगा कोस्टल डिफेंस के लिए। वहाँ प्लेन लैंड में होगा लड़ाई वगैरह, तो यहाँ पे पहाड़ में आपको दिक्कत आएगी बहुत ज़्यादा। हाउ डज इट शो अबाउट द राजपूत स्ट्रैटेजीज? इट शोज दैट द राजपूत्स यूज terrain as advantage. Next question है folklore of Hampi, that is the hare chasing hounds. उसके ऊपर extract, Harihara and Bukka chose Hampi when hare chased hands. This is seen as a sign of bravery. Now, what does this symbolism reflect about ruler-guru relations? Basically, it shows that spiritual interpretation guiding politics. Now, how did symbolism legitimize kingship? Basically, rulers derived sacred authority. Now, how do myths shape political history? बहुत जरूरी है। Myths cemented cultural memory, पुरानी चीजों को डाल करके वो सीमेंट के जैसा ओके शेप करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, डोमिंगो पाइज ऑन विजयनगरा, तो ये हमने एमसीक्यूज में भी पढ़ा था। सो ही डिस्क्राइब डोमिंगो पाइज विजयनगरा, he described Vijayanagara as larger than Rome with bustling trade. इससे क्या पता चलता है इंडियन अर्बनिज्म के बारे में? इससे पता चलता है अपना अर्बन स्केल बहुत विशाल था, इट वाज प्रॉस्पेरस। Now, why did rulers treat Portuguese traders especially well? Why? Because of the horse trade. Next, what product was most sought from Portuguese? Horses. क्यों? They were vital military assets. बढ़िया क्वालिटी के हॉर्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट केस है आपका म्यूजिकल पिलर्स ऑन विठला टेम्पल के ऊपर। व्हाई? बिकॉज इट शोज स्ट्राइकिंग प्रोड्यूसेस म्यूजिकल नोट्स। इससे क्या पता चलता है इंडो आर्टिस्टिक इनोवेशंस के बारे में? बेसिकली इट शोज द फ्यूजन ऑफ आर्ट एंड साइंस along with devotion. Next, how did Krishna Devaraya's patronage support such works? Because he funded artisans generously. Now, how can architecture teach us about society beyond politics? क्यों? Because architecture basically reflects culture, economy, aesthetics. Okay. Now, next case है आपका Battle of Talikota of 1565. Here, the Vijayanagara city was sacked, temples ruined, and civilians were massacred. Now, why was this a watershed moment in South India? Because this showed the end of Vijayanagara dominance. And which powers defeated Vijayanagara? Basically, it was the Deccan Sultanate's coalition. And what happened after that? Basically, it fragmented the Nayaka rule. Okay. Now, next case is on Babur's view of India. Well, Babur called our India a land of few charms, but rich in gold, artisans and crops. Now, उसके बावजूद भी why did he stay despite negative impression? क्यों भाई? खाना अच्छा नहीं है तो पेट भर के क्यों खा रहे हो? Because of wealth, artisan, okay, लालच, रुपया पैसा, artisanship चाहिए। Now, which features made India attractive? It was basically the gold, silver, और भी बहुत कुछ थे पर वो कहना नहीं चाह रहा था। Gold, silver, climate, tradesmen, वो जहाँ से आया था वहाँ का क्लाइमेट कैसा था और अपना देश का क्लाइमेट कैसा था सोचिए। कुछ बोलना नहीं चाह रहा था, उसके नहीं बोलने से क्या हमको क्या पता नहीं है? We know these things. आप जब कहीं पे नेगोशिएट करने जाते हो, बाजार में कुछ खरीदने जाते हो आलू वाले से, आलू वाला बोलता है भैया ये 40 रुपया किलो। आप शुरुआत आप जानते हो वो सही बोल रहा है पर आप उसको दाम को कमाना चाहते हो। आप क्या बोलते हो? अरे भाई तुम्हारा आलू देख के खराब लग रहा है, अंदर से सड़ा हुआ होगा, चलो 30 रुपया किलो दो। ये एक स्ट्रैटेजी है ना, नेगोशिएशन। ओके, नाउ व्हाई इज बाबरनामा इंपॉर्टेंट टू हिस्टोरियंस? बिकॉज इट्स द फर्स्ट पर्सन मेमोir, इट्स कैंडिडली रिटन। Okay, now Akbar, next case is on Akbar at Chittorgarh of 1568. Well, what's the extract? Basically, Akbar massacred 30,000 civilians and then later abolished jizya and promoted tolerance. What contrast do we see in Akbar's policies? Brutality versus tolerance. एक ही आदमी के कितने रूप है ना? Why mighty rulers shift from violence to pragmatism?
क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि हमको और टिके रहना है, अपने साम्राज्य को बढ़ाने से छोड़ दीजिए, टिके ही अगर रहना है ना, तो उनको टॉलरेंस सबको लेकर चलना ही पड़ेगा। केवल यही बोलने से नहीं चलेगा कि मुझे कैडबरी ही चाहिए, मैं दूसरे कंपनी का चीज़ को भी खाऊंगा, है ना। सबको लेकर के चलने की बात है। ये आप अपनी फैमिली में भी देखते हो, किस फैमिली में क्वारल्स झगड़े वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन फैमिली के जो हेड्स होते हैं वो सबके बातों को सुनते हुए सबको लेकर के चलते हैं। ये हर घर में होता है ना। Now, what policy eventually stabilized Akbar's empire? It was basically the Sulikul, सबको लेकर के चलने वाली बात, tolerance. Okay, next case is on Panch Mahal at Fatehpur Sikri. So, basically it's a five-storied palace, airy and open. क्यों भाई? What does the design suggest about Mughal court life? It shows courtly openness and cultural branding. आप देख रहे हैं आर्किटेक्चर से भी बहुत कुछ बताया जा सकता है। अच्छा, फतेहपुर सिकरी को लेटर अबंडन क्यों किया गया? बिकॉज ऑफ वाटर स्टोरेज शॉर्टेज, पानी की कमी। Now, how did architecture reflect Akbar's vision? Basically, it reflects Indo-Persian synthesis. Okay, the next case is on translation projects, Raznama. So, Akbar had Mahabharata, Ramayana, Gita translated into Persian. क्यों भाई? क्यों? इससे क्या पता चलता है? What does this translation serve? It's promote, basically इससे पता चलता है he wanted to promote cultural synthesis. How does this foster intercultural dialogue? Because it brought Hindu texts into court culture. देखिए हम बहुत डिटेल्स में आपको ये आंसर्स नहीं बता रहे, शॉर्ट शॉर्ट में बोल रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर ये एग्ज़ाम में आपको पूछे जाए तो इसका जो बिगिनिंग पॉइंट होगा, ओके, जैसे अक्सर आपको ऐसे लिखने के लिए कुछ पॉइंटर्स दिए जाते हैं, हम आपको सॉर्ट ऑफ पॉइंटर्स में बता रहे हैं, पूरा डिटेल्स एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। Okay, now how does this compare to today's translation projects? Because this is quite similar to global translations today. आज भी देखिए एक भाषा से दूसरे भाषा में ट्रांसलेशन होता है। And what does this show? Again, cultural synthesis. Okay, next case है आपका जौहर at चित्तौड़गढ़. So basically, hundreds of Rajput women jumped into fire when the fort was breached. क्यों भाई? क्यों औरतों ने ऐसा एक्सट्रीम स्टेप लिया? टू अवॉइड इंस्लेवमेंट, उनको स्लेव नहीं बनना था। सर कट जाएगा लेकिन सर झुकेगा नहीं, समझ रहे हैं आप? दैट्स द राजपूत। उसके बाद व्हाट वैल्यूज डिड इट रिफ्लेक्ट इन राजपूत कल्चर? वैल्यूज क्या थे? वैलर, ऑनर, रेजिस्टेंस। Now, how do historians approach such difficult chapters today? With empathy but objectivity. Don't blame. No blame today. Okay? इसके ऊपर मैंने आप एक वीडियो भी बनाया, आप जरूर देखिएगा उसे। हिस्ट्री के डार्क टाइम से क्या सीखा जा सकता है। ओके, नाउ शाहजहां एंड द ताजमहल, दैट्स द नेक्स्ट केस। वेल, शाहजहां built as memorial for Mumtaz Mahal and it's a symbol of Mughal art. Now, why is Taj considered beyond an architectural feat? Because it's a symbol of love and grandeur. Now, how does it reflect Mughal prosperity? Because it shows immense finances were allowed to just build this. Now, how did cultural projects decline post Aurangzeb? It was declined due to the drained treasury from wars. लड़ाई करते जाओ तो रुपया तो लगेगा ना लड़ने के लिए, सेना को आपको सारे फैसिलिटीज देने पड़ेंगे, तो रुपया आएगा कहाँ से? उसका ट्रेजरी ड्रेन हो रहा था। ओके, औरंगजेब्स लास्ट लेटर, यह है नेक्स्ट केस। आई हैव नॉट डन वेल फॉर द कंट्री, आई डिपार्ट हेल्पलेस। यस, इससे क्या पता चलता है? रिग्रेट। और क्या, सारा जिंदगी भर जो भी किया सही नहीं किया, बहुत कुछ अच्छा भी कर सकता था वो, टॉलरेंस को अगर लेकर के चलता तो। Now, how did these policies backfire? Because of over centralization, intolerance, सब कुछ वही करेगा, centralization करके ही करेगा, over centralization and mainly intolerance. Now, what do such letters teach students of history? It teach human dimension of rulers' dilemmas. Okay, ये सब important है dear students, आपको ये बातें जाननी है।
अच्छा, नेक्स्ट केस है रानी दुर्गावती ऑफ 1564 इनके ऊपर. शी वॉज अ गोंडी क्वीन हु फॉट valiantly and perished by suicide in battle. Why is her story inspirational? It shows courage under overwhelming odds. And what social message does it send about women in leadership? It shows that women can also be great resistance leaders. What's about men and women? Person who has capability can become a great leader. That's it. Now, how do modern historians celebrate her memory? As a national heroine of central India. Okay, next है आपका महाराणा प्रताप at Haldi Ghati. He escaped despite Mughal upper hand and used guerrilla tactics. What does this say about perseverance in resistance? He never surrendered. His refusal to surrender, it tells us about it. How did terrains aid Rajput? Basically, Rajputs used the Aravalli mountain hills, basically hills, as shield. Now, which community support strengthened them? It was the Wills' knowledge and archery support. Okay, next is Ahom's pike system. Now, every able-bodied man offered service in return for land. Now, how did this strengthen the Ahom defense? Well, it's a broad participation built resistance. Now, how was it different from Mughal Mansabdari? Because unlike Mughal paid officers, it was a civic duty. And what do modern parallels can you think of? This is somewhat very much simple, similar to national service today, which is there in some countries like South Korea, I think. Yes, Israel is also there. Now, Battle of Saraikar, 1671. The Lachit Borfukan led 10,000 Ahoms to defeat 30,000 Mughals. Kaise? What tactics? River warfare was the tactics. How the geography played the role? Well, they used guerrilla tactics. It's a very unique tactics. Okay. Now, what lesson does it give you about quality versus numbers in war? It tells us that the Brahmaputra terrain was used for guerrilla tactics, and it tells us that the quality, if it has more skill, then size just doesn't matter. आप गॉडजिला के मूवी डायनासोर के मूवी देख के आपको लगेगा हाँ साइज डज मैटर, लेकिन सोच सकते हैं उस डायनासोर के कान के अंदर में एक छोटा सा अगर चूटी चला जाता है, एकदम ब्रेन के अंदर चला जाता है, वो उसको पागल कर देगा. वहाँ पे चूटी का स्किल है, वो अंदर भेद के जाके उसका दिमाग को खराब कर सकता है. तो साइज नॉट जस्ट मैटर्स माय डियर स्टूडेंट, इट्स द स्किल दैट मैटर्स. Now, next case is rise of Sikh Khalsa of 1699. So, Guru Gobind Singh formed martial brotherhood, just devoted to justice. क्यों भाई? Why was Khalsa necessary at that point? To resist the persecution under Aurangzeb. And what values did they embody? Bravery, equality, faith. And how did it transform the Sikh identity? It transformed them from spiritual to militarized community. Okay, next case, martyrdom of Guru Tej Bahadur of 1675. Now he refused to convert and was executed in Chandni Chowk. What principles guided his decision? Basically, religious freedom. I am free to choose whatever religion I want to pursue. Now, why is it seen as sacrifice for all religions, not just Sikhism? Because it defended the Kashmiri Pandits. Now, what site commemorates this today? It's the Gurudwara Siz Ganj Sahib. Now, Maharaja Ranjit Singh, next case of 1799. He united the Sikh under empire and was a tolerant ruler. What was his leadership unique in Northwest India? Because he unified Sikhs into a central state. Now, how did tolerance strengthen his empire? Because his empire included both Hindus and Muslims. And he Now, how did he resist British advances initially? Because of the centralized military power. Okay. Now, next case, Todarmal's revenue system. He surveyed land, assessed crop yields, and fixed revenue fairly. How did this improve efficiency? Because of he prevented overtaxation. And can you compare it with Sultanate's harsh taxation? Yes. Unlike the cruel extraction in Sultanate, this was much better, right?
This was much fair. Now, why is this significant for modern economic history? Because this is a step towards scientific administration. Previous was illogical. Now, next case, economic role of temples. Now, temples were the centers of credit, irrigation, and trade networks. Okay, so why were temples more than sacred spaces? Because of nodes of economy and culture. Now, how did temple donations impact economy? Because it redistributed wealth. Okay, among other people of the society. Now, can you compare to the role of banks today? Yes, it's quite similar to our finance houses of today. Now, next case is on hundis as financial innovation. So basically, bills of exchange enabling long distance trade, right? Now, what risk these hundis minimize? Basically, it avoided carrying cash which can be plundered. Now, how did this help merchants to unstable times? Because it enabled safe credit transfer. And why is it considered a precursor to modern banking? Because this is very much like modern checks. Okay, the last question on cultural resilience. Now, despite invasions, India remained wealthy and adapted culturally, revived traditions, right? Now, how did local communities rebuild after wars? What do you think? Well, you see, the local communities were rebuilt by they rebuilt towns and temples as well as economies. Now, which cultural forms flourished despite instability? It was the arts, music, painting. I have talked about this. Now, what lesson in resilience do we learn from this period? We learn that survival through adaptability and creativity.